हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं रिलायबल सीरीज इंग्लिश कुमार भारती स्टैंडर्ड 9 इसका यूनिट 2 का 2.1 इनविक्टस के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 2.1 इनविक्टस के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है अबाउट द पोयम। ये जो आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, वो रिलायबल सीरीज़ के हैं और डाइजेस्टिव क्वेश्चन आंसर्स भी हमने किए हैं। अगर आपको डाइजेस्टिव क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप वो भी देख सकते हैं। डाइजेस्टिव क्वेश्चन आंसर्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो हम करते हैं आगे। न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो आपको ये सारे जो मीनिंग्स है वो देखने के लिए वीडियो को पॉज करना होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं वार्मिंग अप की तरफ। थिंक एंड रिस्पॉन्ड विथ येस और नो। So these are the answers here. Next, write about your feelings and reactions in 4 to 5 lines. You may describe your feelings and reactions using other words than those given here. आपको किसी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है गेस व्हाट द फॉलोइंग सिंबलाइज एंड मैच द पेयर्स। सो दीज आर द आंसर्स हियर। इसके बाद हम बढ़ते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विच लाइन शो दैट द पोएट हैज सफर्ड हिज हार्डशिप्स ब्रेवली। What does the poet have full control over? What is the poet thankful for? What is meant by the place of wrath and fears? फिर हम बढ़ते हैं इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज द पिट फ्रॉम द पोल। सो योर आंसर इज थर्ड वन। नेक्स्ट, in the fell clutch of circumstances, I have not winced nor cried aloud. Second one, I have not expressed my grief even when I had to suffer great pains. बढ़ते हैं आगे। Under the bludgeoning of chance, my head is bloody. I have suffered many setbacks and losses for which there was no reason. Next, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. So answer is, even though I am growing old, I am not and shall not be afraid. How charged with punishments the scroll, I may have to pay for many of my mistakes. I am the master of my fate. I take responsibility for everything that happens in my life. I am the captain of my soul. My actions are the results of my own feelings. Then personal response, I am the master of my fate. Do you agree with the poet's views? इसके बाद हम बढ़ते हैं ग्रामर एंड वोकैबुलरी की तरफ। राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोयम। द राइम स्कीम इज ABAB. Read the extract carefully and do the activities. Complete the web diagram with the values highlighted in the passage. Explain the important message the poet William Henley gives us.
इसके बाद हम बढ़ते हैं पोएटिक डिवाइस. गिव द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा 2 and 4. Rhyme scheme of second stanza and fourth stanza is ABAB. Pick out the rhyming words in stanza 1 and 3. Rhyming words in stanza 1, me, be, pole, soul. Rhyming words in stanza 3, tears, years, shade, unafraid. Name and explain the figures of speech. Black as the pit from pole to pole. Simile, direct comparison, night is compared to black pit. Then repetition, word pole is repeated for a better poetic effect. Then appreciation of the poem. Write an appreciation of the poem considering the following points. The poem Invictus is a beautiful composition by William Ernest Henley. The meaning of the title is Unconquered. The poem talks about displaying grit, strength, and determination despite the hardships which life has to offer. The poet states that he takes responsibility for everything that happens in his life. The poet calls himself the master of his fate and the captain of his soul. In other words, the poet wants us to be unafraid at all times and wants us to accept what life has to offer courageously. The rhyme scheme used in the poem is ABAB, simile, personification, and repetition are some of the figures of speech used in the poem. Beautiful use of the figures of speech personification is seen in the line. Out of the night that covers me, an inspirational poem indeed. तो इसी के साथ में बच्चों हमने 2.1 इनविक्टस के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश किए. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 2.2 अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल्स के साथ. तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.